Good evening, sir. Good evening. Let me know when you guys. I think let's just all well, all well. Let's wait for a couple of minutes so that more people can join. Till then, I mean, sorry, could not join the call on Wednesday because I had a Twitter space to attend. Um, how is it going? Like, you guys did your homework? क्या चल रहा है? Sir, I have made few charts and I have shared link in the Google form. Yeah. Please review them if you can. Yeah. I'm just nervous about it. Yeah. So, yeah, I mean, definitely we'll do that. Probably I'll also ask the CryptoPro team to set up something where we could do that in a much more efficient way, so that I am not taking up the time on this class, right? So, but yeah, I mean, definitely we'll do that. Any other question? Let me just open the sheet. So, I mean, what are your views like? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? What is going on? कैसे लग रहा है अभी तक चीजें? Today is Sir, अगर practical मंडे. ओके, एक एक आदमी करके बोलो. कौन बोलना चाहता है पहले? Sir, can I speak? Yeah, we'll start the class at 9:40. We'll give 6 more minutes for folks to join if someone is about to join. Okay, so yeah, please go ahead, Jaydev. Sir, actually you were true कि like जब तक हम लोग charts try नहीं करेंगे, like zones बनाना शुरू नहीं करेंगे, trend line शुरू नहीं करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं तो मतलब समझ में कहाँ से आएगा जब उसको practically apply नहीं करेंगे. आप मानोगे नहीं, मैंने 5 बार 2-2 बार आपकी class 5 की recording देख देख के सीख सीख के अब भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसना शुरू हुआ है. To be honest, but trying my best to keep up with the class, but I am too very much excited for candlesticks. That is my favorite part. Got it. Yeah. Awesome. Also, like I heard from the CryptoPro team that few people were thinking कि बहुत basic चीजें हम उड़ा दे रहे हैं and stuff like that. So the problem for me is like you are like 20 people here जिन लोगों को अलग अलग knowledge है markets का या किसी को कुछ भी knowledge नहीं है. तो मुझे तभी पता चलेगा कि आपके पास कितना knowledge है जब आप questions पूछेंगे मेरे को, right? और else मेरे को assume होगा कि कुछ चीजें आपको पता होंगी. सो इन केस आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज स्किप कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज बाकी लोग को आता है आपको नहीं आता है, तब भी आपको वो क्वेश्चन पूछना है भले ही कितना भी सिली हो, क्योंकि क्या पता अगर आप वो सवाल ना पूछो और आपको आगे जाके आपको लाखों का नुकसान हो जाए, राइट? सो यहाँ पे पैसे की बात आती है. स्कूल में भी टीचर बोलते थे हमें कि कोई भी क्वेश्चन हो, स्टूपिड से स्टूपिड क्वेश्चन हो तो पूछो. तब हम पूछते नहीं थे क्योंकि मार्क्स मार्क्स से किसको प्यार है, लेकिन पैसे तो सबको प्यारे हैं, राइट? सो जितने भी बेवकूफ से बेवकूफ सवाल है वो आप मुझे पूछो, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, राइट? सर बट जितना मैंने मतलब अभी बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, मेरा डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ रहा है. लाइक रेंज लेवल अगर मैं मैच बॉडी के साथ एंडली बॉडी पे कभी कभी बनता है, कभी कभी बनता है.
मतलब वो प्राइस लेवल्स टच हो रहे हैं, लाइक एम आई आइडेंटिफाइंग वेल और ये मेरी डू आई जस्ट नीड टू हाँ जी मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी हाँ जी ठीक है, मैंने आप ही का ये खोल के रखा है। लेट्स सी, ये शायद आपका पहला चार्ट है। आई थिंक वी हैव 4 मिनट्स, तो 4 मिनट में जितने चार्ट्स हम देख सकते हैं वो देख लेंगे। ये आपका इथेरियम का चार्ट है, 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, आपने बॉटम विक से लेके आपने बॉडी तक बनाई। इसको शायद आप थोड़ा और नीचे भी बना सकते थे यहाँ तक, बट ठीक है, आपने ये वाले टच पॉइंट्स भी ले लिए, सो दैट गुड इनफ। सो ये आपका ब्रॉडर लेवल हो गया। दिस इज फ्रॉम 1100 टू 8085, राइट? सो दिस इज परफेक्ट। एंड बाकी क्या बनाया आपने, देखते हैं। अच्छा, आपने सिर्फ लेटेस्ट बनाया है, ठीक है। सो अभी आपने ये ट्रेंड लाइन बनाया जहाँ पे एक फेक आउट आया और वापस ये इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, ये भी परफेक्टली फाइन है, राइट? एंड ये आपने बनाया यहाँ पे शायद और टच पॉइंट्स होते तो अच्छा होता। लाइक इन केस ये जो ट्रेंड लाइन आपने बनाया है, इस पे आप देख सकते हो एक टच पॉइंट है और 2 टच पॉइंट है, विच इज नॉट रियली वेरी एक्यूरेट। जितने ज्यादा टच पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। सो प्रॉब्ली इसको आप वापस बना सकते हो, या तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ तक, एंड देन यू कुड सी कि ओके दिस इज एडिंग सम वैल्यू और नॉट। बट अगेन, लाइक एज वी सी कि अगर वो इस लाइन को टच नहीं कर रहा तो वो ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे वो फेक आउट दे चुका है, राइट? सो ओके दिस लाइन इज नॉट वेरी मच एक्यूरेट, बट ये वाला जो लाइन है आपका, ये वाला लाइन एक्यूरेट है। एंड सर दिस जोन्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बॉक्स के बारे में, हाँ जी बॉक्स तो आपके परफेक्ट है। इसको, ओके इन बॉक्सेस को की लेवल्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ हुआ है, सो इनको की लेवल्स कहते हैं, राइट? एंड आप देख सकते हैं कि जो हाईज है वो कम होते जा रहे हैं। ये हाई ऊपर था, फिर नीचे था, फिर इसके नीचे हुआ, अभी इक्वल हाई पे है। सो दैट मीन्स अभी भी हम लोग बियर ट्रेंड में है, अनटिल अनलेस हम लोग एक और हायर हाई बना नहीं देते हैं, टिल देन वी आर इन अ बियर ट्रेंड। सो आप देख सकते हो ये हाई, इसके हाई के नीचे ये हाई है, इसके हाई के नीचे ये हाई है। अब दिस हाई एंड दिस हाई आर इक्वल, राइट? So until unless the price breaks above this box, we have to be bearish in the short term. सर मैंने BTC USD का चार्ट अगर आप खोलेंगे तो उसमें मैंने डे का भी ट्राई करा हुआ है एंड मंथली भी ट्राई करा हुआ है। लाइक 26 जैन वाला मैंने आपको भेजा होगा, लाइक क्लास 7 में। ये मैटिक का है, एक बार मैटिक का देख लेते हैं। हम्म, मैटिक का ये जो ट्रेंड लाइन है, ये अच्छे से प्ले आउट तो हुआ है आपका, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद ही इट स्टार्टेड पंपिंग, राइट? थोड़ा और एक्यूरेसी ट्राई करो, लाइक प्रॉब्ली दिस कुड हैव बीन अ लिटिल ऊपर, बट उतना छोटे लेवल से कुछ नहीं होता है, बिकॉज मार्केट में मैनिपुलेशन भी बहुत ज्यादा होता है। सो जो आप ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रेंड लाइन से थोड़ा ऊपर नहीं जाए और थोड़ा नीचे नहीं जाए, ठीक है? तो वो चीज आप उतना रूम ऑफ एरर रख सकते हो। बट आई थिंक दिस, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, दिस ट्रेंड लाइन, दिस इस जनरली लोग ऐसे ट्रेंड लाइन बनाते नहीं, इसको स्पाइडर लाइंस कहते हैं। तो लोग जनरली ऐसे ट्रेंड लाइंस बनाते नहीं है, बट ठीक है, लाइक अगर आपको समझ में आ रहा है कि दिस ट्रेंड लाइन कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड देन अ सपोर्ट, देन इट्स कूल एंड फाइन। एंड जो कि अभी वो चीज कर रहा है, आई डोंट नो इफ दिस इज ओके, दिस इज अपडेटिंग इन रियल टाइम। जो आप चार्ट शेयर किया हो, ये रियल टाइम में अपडेट हो रहा है, राइट? आप देख सकते हो रियल टाइम में अपडेट हो रहा है, विच इज अ गुड साइन। सो दिस मीन्स कि इस लिंक को आप सेव करके रखो, बाद में वापस जाके देखो कि वो यहाँ से सपोर्ट लिया था कि नहीं लिया था। एंड ये जो बॉक्स है आपका रेजिस्टेंस है। एंड आई थिंक आप एक और बॉक्स बना सकते थे, दैट इज 1.2 से लेके 1.3 तक। ये वाला भी आप एक बॉक्स बना सकते थे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बिक गया और यहाँ पे क्लोजिंग बॉडी है। सो ये भी आपका एक बॉक्स यहाँ पे बन सकता था मेरे ख्याल से। सर मैंने इसको रिकरेक्ट करके चार्ट को 26 जैन वाले मैंने आपको 5 चार्ट्स भेजे हैं, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करके भेजा है आई थिंक। हाँ हाँ, तो मैं यहाँ ये कि अभी सारे चार्ट्स खोल नहीं पाएंगे, बिकॉज अभी अपने पास टाइम कॉन्स्टेंट है। सर एंड अगर आप BTC USD वाला देख लेते देन आई कुड बी सेटिस्फाइड, यहाँ क्योंकि पे मुझे कहाँ है उसमें बहुत बीटीसी वाला? तो कंफ्यूजन। बीटीसी वाला दिख ही नहीं रहा मुझे तो। इस फोर्थ लिंक सर, फोर्थ लिंक तो हाँ, BTC USDT परपेचुअल इन क्लास 8, फोर्थ लिंक। समझ गया। सर ये डे जोन्स बनाए हैं एंड डाउन ट्रेंड निकाला है, अप ट्रेंड नहीं बन पा रहा था मुझसे इसमें डे में। तो इसमें आपने ये 1 मंथ वाला जोन है,
तो 1 month वाला सपोर्ट जनरली 1 month में आप लाइंस ड्रॉ करो, क्योंकि 1 month में अगर आप ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट बनाओगे ना तो काफी बड़ा आता है. Like, are you guys बहुत understanding? बड़ा है. Everyone else, are you guys understanding what I'm trying to say? If any, my voice is cracking, is it? I'm not just saying my voice is cracking, no, right? Cool. So if anyone wants me to speak in English, please tell me, because in the last class, nobody said that to speak in English, so I'm speaking in English. Cool. So talking about this chart that Jaydev has done. Jaydev, lekin, why this box is so big? I didn't understand this. सर अगर आप 1 month में टाइमलाइन में जाके खोलोगे तो आपको कुछ अच्छा, पता 1 लगेगा. month में I cannot change it here because it's 1 day time frame. But या cool, got it. ओके. Got 1 month में सर उसी तरीके से आ रहे थे. अच्छा, ठीक है. So in case you feel कि the box is too big, just have different colors for different boxes. So you could make so accordingly you will know which box is which one, right? आपने यहाँ पे लिखा तो है कि 1 month का चार्ट है, 1 month का सपोर्ट है, right? Would request everyone to be on mute, please. Cool. सर आई गॉट कंफ्यूज लाइक 1 month जोन में बनाना चाहिए अभी कि आई शुड जस्ट गो ऑन विद डे टाइमलाइन. व्हाट वुड यू सजेस्ट? I would suggest go ahead with 1 month and 1 month कोई छोटा कर दो बाद में. देखो 1 month वाला इतना बड़ा आ गया, राइट? दिस बॉक्स बड़ा आ गया. अब एक और बॉक्स आप यहाँ पे बना सकते हो, राइट? फ्रॉम 15,900 to 15,400. So this is your daily support. आप समझ गए? जैसे 1 day zone C लिखा है ना आपने, आप 1 day zone D भी बना सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 1 month वाला सपोर्ट अभी आपको इस्तेमाल नहीं होगा जब तक वो प्राइस नीचे नहीं आ जाता, बिकॉज ड्रॉ करके फायदा क्या है, वी नॉट एबल टू यूज इट. Yeah. Right? Sir, I think for me, like going with day zones is comfortable. Like I'm able to make more accurate. जैसे आप देख पा रहे थे day charts मेरे, आपको boxes में कुछ accuracy लगी थी as comparative to monthly chart. इनमें मेरी distance बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी. It's fine. It's fine. वैसे भी like you are just getting started. As and how you will get more experience, ये boxes और छोटी और accurate होती जाएंगी. Even if you look at my boxes are like I have a lot of boxes, right? So I think you will just understand that like अच्छे से धीरे-धीरे. So what I do is I have like 2 BTC charts here, right? One BTC chart is more from an investment point of view. So these charts that I've done on 1 day, I'll not change them. Like I'll not delete anything here. Okay. But whereas come to this BTC USDT Binance wala, this is more of a chart which I keep on changing. Cool. Okay. So for me right now, until the price goes above this, I need not make a support and resistance above this line, right? Because what will I do? So I keep on doing it on the go. Like for example, अगर box यहाँ पे अगर price ऊपर आ गया इस box में, then I go and make another box or another support resistance above. Because 31,000 पे मैं कुछ भी drawing करके फायदा क्या है if the price is at 22,000. Right? So आपको भी वो कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए now because you're practicing, you're not trading, then you do it across the time frames. But once you get pro, once you start trading nicely, then even you can only do in the real time. You don't have to do ऊपर वाले trend lines, है ना? ऊपर वाले करके फायदा नहीं. Like trend lines you could do, but not support resistance boxes for like say 67,000 पे ड्रॉ करके कुछ फायदा नहीं है. बट 67,000 से लेके अभी तक का आप ट्रेंड लाइन क्लिक करते हो अगर, then it would help as a support resistance for you as a trend line, but boxes won't help you if it's not in the range as of now. Okay, sir. Cool. Awesome. So I think let's start with the class. I'll just quickly see what are other doubts apart from the charts that we have. So Rimjim is asking, sir, can you brief me more about VPN which can be used to be safe and secure in DEXs? And so please tell me how can we mask our IP address? I think this is out of the purview of this class, but you could definitely watch some YouTube videos. I currently use NordVPN, not Touch VPN, I guess, but there are a lot of other VPNs as well.
So just put tutorials on how to use VPN in India, which is the best VPN in India. Watch a couple of videos and then just use, just say, Maria is saying Norton. So I think YouTube will help you in this, because I don't do this for a living, so I cannot comment on that. But cool. No, sir. I have just asked this because I was seeing class 4 recording. Yeah. You told ki how to be safe and secure in that, na, using all these VPNs and all. तभी मेरे को पूछना था आपसे कि मतलब कि क्या है ये, कैसे करना है तभी. हाँ, तो VPN, आप VPN पे थोड़ा रिसर्च करो कौन से VPN अच्छे होते हैं. VPN बेसिकली आपकी आइडेंटिटी को मास्क कर देता है. सो VPN से पता नहीं चलता कि आप कौन से कंट्री में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो. सो दैट इज. मेरे को चार्ज में ये ट्रेंड लाइंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है. लाइक मैं बार बार रिकॉर्डिंग देखने का क्योंकि थोड़ा काफी चीजों में इंडल्ज हूं ना, इस चक्कर में आई एम नॉट गेटिंग दैट परफेक्ट टाइम जिसमें मैं आपकी वो क्लास. आपने तो होमवर्क में तो डाले नहीं लिंक्स. नहीं, मैंने बनाई नहीं ना सर, वही तो मैंने बनाई नहीं. आपको थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कैसे भी बनाना है बना दो बस, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं देख के फिर मैं कमेंट्स दूंगा और आपको सिखाऊंगा कि और कैसे अच्छे बना सकते हैं. सो जैसे मैंने एक चार्ट खोला, ये बीटीसी वाले ही खोला था, तो उसमें मेरे को समझ आया मैं किस पॉइंट से उसको उठाऊं, लाइक कहाँ से बनाऊं सब. जैसे आपने वो बताया था, मैं क्या भूल गई, ट्रेंड लाइन वाला जो बताया था, ऐसे ये पोर्शन है, इधर से तुमको बनाना है, पता चलेगा कि इधर से प्राइस ड्रॉप हो रहा है या हाई हो रहा है, उधर से तुम्हें ट्रेंड लाइन दूर तक की करनी है. सब वो पॉइंट मेरे को चार्ट देख के ऐसा अजीब सा फोबिया हो रहा था कि कैसे इसको कहाँ मैं पॉइंट आउट करूं, कैसे करूं, बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो रहा था, इसलिए मैंने उसको बंद करके हटा दिया. What we could do is probably at the end of this class, but you won't be able to share your screen. ठीक है, we'll find a way where I could take out 5-10 minutes for you, जहाँ पे आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, so Yes, please, let's sir. try and do that. Okay. Okay. Next, Prashant is asking. Yeah, Prashant is asking Bitcoin ROI, which is mentioned in CoinMarketCap, means returns made by Bitcoin since it was being introduced. Yes, it depends. अगर वहाँ पे कुछ time लिखा हुआ है, then it means in the last 60 days, 30 days, 24 hours, whatever it is. If it's written there, that means that is the percentage of return of Bitcoin since it was introduced on CoinMarketCap, not since Bitcoin was born. Okay, since it was introduced in CoinMarketCap. Because if you look at CoinMarketCap, it shows that Bitcoin started from $75, but in real, it started from zero, right? But तब exchanges नहीं थे. जब zero था तब exchanges नहीं थे. So that's why it could not capture that data. I had a query on DEX. Who actually owns them? Who makes the important decisions? If we face any issues in DEX, who can we contact? Example, DYDX. Okay. So basically, हम सब लोग इंडियन गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं, जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट को वोट करते हैं, एंड गवर्नमेंट हमारे भी यहाँ पे डिसीजंस लेती है. कल को हम लोग गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं. जैसे हमने मोदी जी पे ट्रस्ट किया है, हमने मोदी जी को वोट किया है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने वोट किया, बट पूरे इंडिया ने एज अ होल मोदी जी को वोट किया है, एंड मोदी जी डिसीजंस लेते हैं. मोदी जी ने क्या बोलते हैं, 2,000 रुपए के नोट बैन कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस में क्या होता है, there is this called as governance. Okay, this is like a decentralized governance. यहाँ पे क्या होता है, like अगर आपके पास DYDX tokens हैं, if you have the governance tokens, so the DYDX token is a governance token. What is the utility of governance token is, you could propose a change, you could vote for a change, and whatever vote you will do, if it gets maximum people voting yes, then that change would be implemented. For example, if you come here, this is dydx.community/dashboard. यहाँ पे आप आके देखेंगे प्रपोजल्स है, राइट? ये सारे प्रपोजल्स है, एंड ये जो सारे ग्रीन टिक्स है ना, दिस इज लाइक पीपल हु हैव वोटेड हियर. So if you have DYDX tokens, you could vote for them. Okay, and DIP 18. So DIP का full form मैं भूल गया. Let me just check. I think उसको improvement protocol बोलते हैं, proposal बोलते हैं. Let me just check once. Give me a second. Development. किसी को पता है तो कमेंट में बोलो. यहाँ पे भी नहीं लिखा है, but I think it's something related to development improvement protocol. Okay, but again I'll like cross verify and let you know.
सो ये सारे टोटल अब तक कितने 18 रिलीज हो चुके हैं। एंड यहाँ पे इस पे आप क्लिक करोगे तो देखेंगे, आप देख सकते हो कि टोटल 82 lakhs 8.2 मिलियन DYDX टोकन से यस के लिए वोट किया गया है, एंड 5 मिलियन टोकन से नो के लिए वोट किया गया है ना। सो एंड वो चीज किस बारे में है, वो पूरी चीज यहाँ पे लिखी है, मोटिवेशन क्या है ये चेंज करने में, स्पेसिफिकेशन क्या है, ऑल ऑफ दैट। सो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस डाउस के वे पे ये सारी चीजें की जाती है। We could see STX token mentioned in that Excel sheet. You have mentioned building on BTC narrative play. What does that mean? So basically, I have included very small portfolio in STX. So STX is a project which is trying to build DeFi on top of Bitcoin network. If you remember, Ethereum blockchain के ऊपर आप बहुत सारे एप्स, डी एप्स बना सकते हो, राइट। इथेरियम ब्लॉकचेन के आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो, बट बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे आप सिर्फ ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। आप बिटकॉइन के नेटवर्क पे कुछ बिल्ड नहीं कर सकते, इन द सेंस बिटकॉइन के नेटवर्क पे आप कुछ डीफाई एप्लीकेशंस नहीं बना सकते। सो स्टैक्स, दैट इज STX is trying to build something called BTC. Okay, so BTC layer के ऊपर वो चीजें बनाना चाहते हैं, which I think is interesting. So I've invested less than 1.5% of my total asset value. So yeah. You talked about light paper. Where can I find the same? I don't find them in CoinMarketCap. Does Bitcoin have one? No. Light paper is a pretty much new concept. I think it's been in this space since last 2-3 years. And Bitcoin तो आप सबको पता है कि 2008 में आया था। So 2008 में लाइट पेपर का कॉन्सेप्ट नहीं था। So अभी जो नए नए क्रिप्टो करेंसीज है उनके लाइट पेपर्स अवेलेबल है। If you're not able to find it on CoinMarketCap, try CoinGecko. CoinGecko पे भी अगर नहीं मिलता है आपको, CoinGecko is very similar to CoinMarketCap for those people who don't know what CoinGecko is. And if you don't find it here, just write the altcoin name space light paper, and you'll get the light paper if the team has prepared it. Okay, if they have not done it, then you will not find it anywhere. So Prashant, I'll look at your charts probably in the next class. Angad is asking ray line break even price. I didn't understand what this means, but okay, if you could ask more proper questions, then it would be helpful. If resistance can act as support after breakout, then can support act as a resistance? If yes, please explain it in the charts. Definitely. Let's take a new chart. Let's I think I don't have anything here, so let me just turn off everything. Cool. So right now, if you look at this, let's find the support. For example, this is a resistance, right? The price dropped from here. This acted as a support as well. So the meaning of that line is basically जब प्राइस यहाँ से पंप होके वापस पंप हो रहा था, this line was acting as a support, है ना। लेकिन जब वो ब्रेक हुआ, जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ आपका, तब वापस रिटेस्ट पे जब वो आया तो यहाँ से नीचे आ गया, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट था। सो वन सपोर्ट इज ब्रोकन, दैट सपोर्ट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, सो आपको एग्जांपल देके मैंने समझा दिया। यू विल फाइंड मोर एग्जांपल्स, आई एम प्रीटी श्योर। लाइक इफ यू लुक एट द चार्ट अगेन हियर, it again went up, came down, again it acted as a resistance, again it came down, right? So you could like draw this like multiple times and see that the same thing keeps on happening. Once a resistance becomes a support and support becomes resistance. So now Bitcoin has pumped from the level you were telling that day in class 5, after which we make out whether the market will be in bull run or bull trap.
or could we expect a bloodbath of winter again? What does your analysis say on current market currently? So current market के हिसाब से, if I have to say, I think the major resistance for us is few levels. That is, one is this level, right? Until unless it crosses 25,000 level, then we cannot be super bullish. Then this level. But if you're someone who wants to invest for long term, then definitely you can invest, because if you look, Bitcoin has pumped from 15,500 to the current level, which is 48%. But what most of the people will not understand key, because it has pumped so much, they will not buy. Indians की mentality क्या होती है कि cheap में ही buy करना है, महंगा है तो नहीं buy करना है. So Indians don't see कि वो कितना नीचे आ चुका है. Indians don't see this. ये वो लोग भूल जाते हैं कि वो 77% नीचे आया है. But just because वो यहाँ से 50% ऊपर गया है, they feel it's expensive. So what I believe is, if you're someone who is investing for long term and does not have any exposure to Bitcoin, then I think this is the right time to start buying thoda, right? Thoda in the sense, if you have 1 lakh rupees, you can start buying today at with a capital of 10,000 or 20,000 rupees. Okay. And in case if it comes down, then you definitely buy. But what I would suggest is, you buy here, and then if the price again pumps, you buy here, you buy till 30,000 level. 30,000 के नीचे जब तक रहता है आप बाय करो. जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस. 30,000 के ऊपर मैं बिटकॉइन को बाय ही नहीं करूंगा. तो जितना भी मैं बिटकॉइन अगले 3-4 साल के लिए बाय करना चाहता हूँ, मैं 30,000 लेवल के नीचे बाय करूंगा, विच एसेंशियली मीन्स कि अगर बिटकॉइन वापस ऑल टाइम हाई जाता है, दैट इज एट 70,000, तो मेरा पैसा तो डबल तो जरूर हो ही रहा है. एंड ऐसा कोई चीज आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जहाँ पे आप, मतलब डबल, लोग डबल को भी बहुत कम समझते हैं, बट डबल इज लाइक अ ह्यूज थिंग. इट्स बेसिकली लाइक, सपोज आपका एक जुड़वा भाई है और या तो आपके एक जुड़वी बहन है, वो आपके बिहाफ पे काम करके आपकी जितनी सैलरी कमा रही है. सो आई थिंक डबल इज ऑल्सो ग्रेट. सो फॉर मी सिंपल है, 30,000 के नीचे जब तक रहेगा तब तक मैं बाय करता रहूंगा, भले ही वो 22,000 पे हो, भले ही वो 15,000 लेवल पे हो, मैं बाय करता रहूंगा. कूल, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि बिटकॉइन विल अगेन गो टू 70,000 लेवल, तो मेरा पैसा वहां पे डबल होगा. एंड जब मेरा पैसा डबल होगा, आई विल रिमूव माय प्रिंसिपल कैपिटल प्लस अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट, एंड रिमेनिंग मैं उस पर छोड़ दूंगा. दैट विल बी बेसिकली लाइक माय रिटायरमेंट फंड. ठीक है. सो दैट्स माय प्लान. Cool. I think Saurabh is asking how to find genuine airdrops news. ये क्या भेजा है आपने यार? एक्सेस नहीं दोगे तो हम देखूंगा कैसे मैं. लाइक एक्सेस तो दे दिया करो, अब मैं एक्सेस मांगते थोड़ा बैठूंगा. बट ठीक है, लाइक एयरड्रॉप्स अगर आपको जानना है, यू कुड आई थिंक क्रिप्टो प्रो के ग्रुप में अगर नहीं मिल रहा है एयरड्रॉप्स, देन आई विल आस्क देम टू इंक्लूड दैट. ऑल्सो दे माइट बी, there are few websites like airdrops के लिए airdrops.io है, बट इसमें काफी स्कैमी चीजें भी होती हैं, तो इससे दूर रहो. बट व्हाट यू कुड डू इज, यू कुड कम टू दिस वेबसाइट कॉल्ड एज DeFi Llama. DeFi Llama में यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो एयरड्रॉप्स. ठीक है. सो यहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे जिनके टोकन नहीं है, जिनके टोकन लॉन्च हो सकते हैं आगे जाके. सो आई थिंक दिस इज अ रियली गुड वे ऑफ फाइंडिंग एयर ड्रॉप्स. एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि वो प्रोजेक्ट कब लिस्ट हुआ था. जितना पुराना प्रोजेक्ट होगा उतना अच्छा होगा. एंड जिसकी TVL, दैट इज टोटल वैल्यू लॉक. टोटल वैल्यू लॉक का मतलब क्या है कि इतना पैसा इस प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम में लगा हुआ है. ओके. सो जितना ज्यादा TVL होगा उतने ज्यादा अच्छे एयरड्रॉप के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना. सो दिस इज वन वे यू कुड डू. एंड ये लोग पिछले 2 साल से मार्केट में हैं एंड इनका अभी तक टोकन रिलीज नहीं हुआ है ना. एंड इन लोगों ने इन्वेस्टर से $4 मिलियन लिए हैं. सो दिस इज वन वे यू कुड डू दिस, एंड दिस इज लाइक वेरी स्कैम फ्री वे. लेकिन आप बाकी चेक करने जाते हो तो आपको बहुत स्कैमी चीजें भी दिख जाएंगी. Cool. I think let's start with the class today.
So today we're going to learn about candlesticks. So candlesticks was introduced or probably was invented. Okay, someone is asking what are airdrops. So airdrop is basically a marketing activity which is done by a crypto project to incentivize people to use their protocol. For example, if I am starting a new phone, what I'll do is I'll tell people to come use the phone, and people who use my phone will get few incentives or credits or whatever it is. So similarly, airdrops is done by companies to make sure they onboard new people. है ना? So that is that. Few people are asking some questions which is not related to this class. We'll take it at the end of this class. Okay. Let's just concentrate on this and let's finish it off. Saurabh is asking what happened to your last class trading. I think profit ही हुआ था यार. Last class कब हुआ था हमारा? Monday 23rd को हुआ था. ठीक है. Let's talk about everything and anything else at the end of the class. Let's just concentrate here so that we are not wasting enough time. Cool then. Let's start. So this person, Humnesha Huma, this guy, he started the concept of candlestick charting. He was a Japanese rice trader. So rice trading hoti thi, and rice trading ke waqt he thought ki let me put all the prices on a chart and see and represent it with the help of candles. So that's how unhone candles invent kiya. There are a lot of other things apart from candles. For example, you could go for columns. Ye columns hai. Even this is representing the price. You could go for line chart. This is also something else. You could go to area chart. You could go for baseline. You could go for all these things. But the most famous way is through candles. But you could essentially use anything else if you find that more accurate for your trading, right? But most of the traders use candles. And this is the guy who got candles in the play. I'll not read all this. You could take a screenshot, okay? How to read candles? I think we have covered this. Is there anyone on the call who does not understand how to read a candlestick? Please comment. If not, then I'll go to the next slide. Okay. If there's anyone who's explained once, all right. Cool. So this is a green candle. Let's talk about the green candle. So green candle has these lines. These lines are called as wick. Okay. And the bottom of green candle, that is called as opening price. This means ki when the candle was started, when the candle was born, it started from this price. Okay. And it went up till this price, that is a wick high. And when the 1 hour or 1 day candle closed, it closed here. And the bottom, it had gone here. Okay. So this is how it's represented. I think I've spoken about this multiple times. Open price, close price. Open price means price कहाँ से शुरू हुआ. Close price मतलब जब वो candle खत्म हो रहा था तो price कहाँ पे था. Wick is means that is the highest price it went, and lower wick means it's the lowest price it went. And इसका उल्टा कर दोगे, then वो red candle के लिए हो जाएगा. Why this is red candle? Because the opening price was higher than the closing price. Okay, that means the price has gone down. That's why this is red. And यहाँ पे क्या, opening price is lesser than closing price. That's one of the reasons this is a green candle. Okay, this is like simple common sense, right? So Ibrahim, if you have understood, we'll proceed. Okay, so the 3 types of candlesticks. One is a bullish candlestick, bearish candlestick, and continuation candlestick. Okay, not all candlesticks are something that you will use every day, and not all candlestick is something that you will want to remember for your lifetime, right? Cool. Let's talk about bullish candlesticks. So this candlestick is called as a hammer. Now, what is a hammer? Why is it called as a hammer? It's called as a hammer because it looks like a hammer, right? जो कोर्ट में जजेस होते हैं जब वो हैमर लेके मारते हैं वो भी ऐसे ही दिखता है, राइट? सो इसमें चीजें क्या अलग क्या चीजें हैं यहाँ पे. एक तो ये ग्रीन हैमर है, सो द कलर ऑफ द कैंडल इज ग्रीन. सेकेंडली, इट इज बीइंग
इट इज बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, है ना। ये रेड लाइन है, इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है। सो जनरली ये देखा गया है कि जब भी लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में हैमर बनता है उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। अब आप देखो कि इस हैमर में ऊपर की विक नहीं है, मतलब क्लोजिंग प्राइस इज इक्वल टू हाई प्राइस। ये देखो, ये आपकी क्लोजिंग प्राइस है और ये हाई प्राइस है। सो इसमें क्या है डिफरेंस, इसमें क्लोजिंग प्राइस इज इक्वल टू हाई प्राइस, इसलिए लाइन नहीं बना है। समझ में आ रहा है सबको? अंडरस्टैंडिंग? यस, नो, प्लीज, एनीवन इन द चैट? Okay, now first, the most important thing, what I told you is every time you see a candlestick, you imagine it in a way ki what happened here. Okay, just don't look at it as a normal candle, look at it as what happened here. So what exactly happened is this candle started here, है ना, this candle started here. These sellers these sellers pushed the price niche. The sellers started selling, so that's why the price came down. But before this candle could finish, all the buyers pushed it up, and they pushed it up without a wick. That means कि जो buyers हैं उन्होंने पेल के बाइंग किए. Buyers have bought the stocks, crypto, whatever it is, with full potential. That's one of the reasons it came down. Sellers were active here, but the buyers pushed the price up, and there's no wick. मतलब उन्होंने लास्ट मोमेंट तक वो चीज बाय की है. सपोज ये 1 आवर का कैंडल है, 1 आवर का कैंडल है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट मोमेंट पे बायर्स आके पूरा जब तक वो कैंडल खत्म नहीं हो जाता तब तक उन लोगों ने बाइंग की है. दैट्स वन ऑफ द रीजंस आपको विक नहीं दिखा है. विक कब दिखता? अगर बायर्स ने फुल बाइंग की है लेकिन थोड़ा सेलर्स ने वापस सेल किया इसलिए वो नीचे आ जाता, लेकिन यहाँ पे आपको विक नहीं दिख रहा है. दैट मीन्स बायर्स आर स्ट्रॉन्ग. हमेशा जब भी आप कोई भी चीजें को देखते हो तो इस वे में इमेजिन करो, सो दैट आपको एनालिसिस करने में और मजा आएगा, राइट? सो नाउ लेट्स कम टू द चार्ट. Also, what I have observed is hammer and all of these things work really well in stock market, क्योंकि stock market में उतनी मैनिपुलेशन नहीं होती है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में बहुत मैनिपुलेशन होती है. तो जरूरी नहीं है कि एक हैमर अगर बन रहा है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है? सो लेट्स फाइंड हैमर्स हियर. देखो, परफेक्ट हैमर तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? परफेक्ट हैमर तो आपको नहीं मिलने वाला है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही. सो सपोज इवन दिस कैन बी कॉल्ड एज अ हैमर, बट भले इसके ऊपर की विक है थोड़ी, बट इसको आप हैमर जैसे कंसिडर कर सकते हो. भले आप इसको हैमर बोल नहीं सकते शायद, लेकिन आप इसको हैमर कंसिडर कर सकते हो. ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बना है, ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बना है, एंड इस हैमर के बाद प्राइस ऊपर जाने लग गया. नाउ ऑल्सो इफ यू वांट टू यूज ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे आप आ सकते हो, एंड हियर यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स. इस पे आप क्लिक कर दोगे तो आपके लिए ऑटोमेटिकली सारे वो हैमर्स दिखाने लग जाएगा. ओके, लेट मी जस्ट शो यू. सो यहाँ पे इट्स नॉट शोइंग दिस एज अ हैमर बिकॉज ऊपर का विक है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज, यहाँ पे इस कैंडल में लोगों ने नीचे पुश किया लेकिन वापस बायर्स आके बाय किए, राइट? सो इवन इफ इट्स अ रेड हैमर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर लंबा विक बन के ये रेड में क्लोज किया, दैट मीन्स बायर्स ने बाय किया है यहाँ पे, है ना? सो आई थिंक इसमें सिर्फ डॉजी दिखा रहा है, ये बियरिश इंगल्फिंग है. हैमर कहाँ दिखाएगा, देखते हैं. हैमर दिखाई नहीं रहा है, वियर्ड. Cool, I'll give you more examples of hammer. I think in stock market वो hammers वो बनते हैं. Let's open stock market का chart and see. ये भी सारे हैमर्स ही हैं, बट द प्रॉब्लम इज वो थोड़ा थोड़ा ऊपर विक आ जा रहा है. आप लोगों को कहीं दिखता है तो बोलो.
Sir, even that can be also considered as a hammer, right? Because Where? wick from like whatever you're showing, and the body is top and the wick is long, right? So more than the body, the wick size is more, right? So because of that, we can consider as a hammer, and because the price is also is increasing from their top. Yeah, but according to the book, Yeah. according to the book, generally the hammer does not have a upper or lower wick, like upper wick. Like Yes. two kinds of hammers. One is like no, one is called as a hammer. One is called as an inverse hammer, which is like ulta. Yes, sir. Yeah. So what I'm trying to say is I'm Sir, trying. there's a inverse hammer out over here. Inverse hammer out over here. Just on your ओपी left. Yes. ओपी कॉइन में सर बना है हैमर, आप देख सकते हो। क्या बोल रहे हो? ओपी। ओपी क्रिप्टो। Yes, sir. हाँ। सर एक हैमर जीआरटी में भी बना है एट 1 hour टाइम फ्रेम, बट वो 19 जैन को बना था। Okay. So OP में 1 hour time frame में बना है. हाँ. So these kind of things. This is a hammer. This is a hammer. This is a good example of a hammer, right? This inverted hammer है ये, है ना? Yes, sir. I think यहाँ पे hammer का भी एक होना चाहिए वैसे है. एक सर जीआरटी में बना है, एक बार आप देख सकते हो, वो काफी अच्छा बना हुआ है। बट इसमें बट क्यों बोल रहे हो आप? अच्छा बना है तो अच्छी चीज है ना? नहीं, एक्चुअली वो मैंने पेपर ट्रेड करते उस पर ट्रेड ली थी, तो मेरे को याद है। 1 hour टाइम में बोल रहे हो? यस सर, 1 hour टाइम फ्रेम में 19 जैन के आसपास। अच्छा, 19 Jan. Okay. ये भी एक हैमर. हाँ, ये देखो हमें परफेक्ट हैमर दिख गया फाइनली. ये परफेक्ट हैमर है, इसकी ऊपर की विक नहीं है. देख रहे हो जहाँ पे एच लिखा हुआ है, ऊपर की विक ही नहीं है यहाँ पे. ये परफेक्ट हैमर है. जो आप बोल रहे हो 19 Jan, ये भी हैमर है. करेक्ट है, आप भी सही बोल रहे हो, ये भी परफेक्ट हैमर है. Cool. So I think you have understood. The hammer can be either green, either red. It could be anything, right? So hammer का मतलब क्या है बेसिकली कि ट्रेंड चेंज हो गया है उस आवर में. बट क्रिप्टो में गारंटी नहीं रहता है कि अगर वो हैमर बनता है तो फिर वो ऊपर ही जाएगा. बट व्हाट दिस विल एसेंशियली टेल यू इज व्हाट इज हैपनिंग इन दैट आवर or day, whatever time frame you're choosing. Now this is called as a piercing pattern. Okay, piercing pattern का मतलब क्या है कि there's a red candle here which has no wick, and उसके बाद एक green candle आ जाता है with again no wick, which is closing shoulder should be more than 50% of the candle. Now this is something that I don't usually trade with, but just because it's written on the book, I'm telling you this is something how a piercing pattern looks. You could probably take a screenshot. I think piercing pattern क्रिप्टो में देखना तो बहुत मुश्किल है विदाउट विक, बिकॉज क्रिप्टो में इतना मैनिपुलेशन होता है कि विक आ ही जाता है ना. सो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू लुक एट हियर. आई थिंक इवन दिस इज अ हैमर, दिस इज आल्सो अ हैमर, बट इसकी बॉडी थोड़ी लंबी है इसलिए यहाँ पे एच लिख के नहीं आ रहा है, राइट? नहीं तो ये इन्वर्टेड हैमर तो जरूर है. ठीक है, सो आई थिंक इन्वर्टेड हैमर में आ जाना चाहिए उसको. लेट्स जस्ट चेक. लेट्स रिमूव साइड को यहाँ से. Inverted. Inverted hammer में नहीं आ रहा है, but हाँ this also could be called as a inverted hammer, provided ये body जो है वो थोड़ी ऊपर close होती है, ये body थोड़ी लंबी close होगी. So basically body should be less than 75% of the total candle. That's when it is called as a hammer, right? But इसमें थोड़ी body ऊपर है. But again, if you understand the perspective of what is going to happen here, then you will understand कि okay, this is the meaning of it. So this is piercing pattern. The second is bullish engulfing. Bullish engulfing का मतलब क्या होता है? एक डाउन ट्रेंड हो रहा है एंड एक कैंडल बनता है, रेड कैंडल. उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनता है ना, वो पूरा रेड कैंडल को खा जाता है. इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? इसका मतलब ये हो रहा है कि जो बायर्स हैं
वो पूरा आउट पावर कर चुके हैं एंड आपको काफी दिख जाएगा. आई मीन इफ यू गो टू बिटकॉइन, सो आपको काफी सारे बियरिश इंगल्फिंग दिख जाएंगे, है ना. बियरिश इंगल्फिंग में जैसे देखो ये रेड कैंडल बना है एंड इसके बाद जो अगला कैंडल बना है वो ग्रीन कैंडल बना है एंड वो पूरा का पूरा पुराने कैंडल को खा गया है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज अ बियरिश इंगल्फिंग. अगेन इट्स अ बुलिश कैंडल. अगर ऐसा बनता है तो बुलिश कैंडल है. बट अगेन एज आई टोल्ड यू कि इसके बेसिस पे अगर ट्रेड करोगे क्रिप्टो में तो आप लॉस करोगे. इसके बेसिस पे ट्रेड आपको करना ही नहीं है, ठीक है. जैसे ये भी एक बियरिश इंगल्फिंग है एंड ये क्या कि ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है, बट इसके बेसिस पे आप ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नॉलेज है. तो जनरली मार्केट में पैसा तब बनता है जब आपके पास एक एज होता है दूसरों के ऊपर से. ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये सबको पता है, ये मतलब जो जो थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है उन सबको ये चीजें पता है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज अ बुलिश इंगल्फिंग. यहाँ पे विक हो सकता है. आई थिंक इन्होंने स्लाइड्स बनाने वक्त इन्होंने विक नहीं डाले यहाँ पे, बट यहाँ पे विक हो सकता है. And this candle, the next candle covers the previous candle including its wick. पूरा का पूरा वो खा जाता है. ओके, इसका उल्टा करोगे तो it becomes inside candle, जिसके बारे में शायद मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में भी आगे जाके बात करेंगे. Cool. Any doubts here? I think comments आपका मुझे दिख नहीं रहा है. One second, let me just add comments also. How should we trade using hammer? I think when we start talking about strategies, that's when we will include all these things, because right now if I tell you, I'll have to give you the whole setup कि अगर हैमर बन रहा है और अगर EMAs ऊपर है या नीचे है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो. वो सब अभी ऊपर जाएगा आपके, बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये समझना जरूरी है. स्ट्रैटेजी के ऊपर जब आएंगे तो पूरा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम कैसे बनाते हैं, ऑल ऑफ दैट, राइट. Awesome. Any more questions here? Should we proceed? Sir, I got disconnected because of my internet. I was not able to understand piercing pattern. ये तो समझ में आ गया, bullish वाला engulfing. मेरे को नहीं, सिर्फ चार्ट पे दिखा दीजिए piercing वाला, theoretical नहीं. अच्छा, so chart में we'll have to find. I think this is a piercing pattern, right? आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कैंडल है एंड द सेकंड कैंडल इंगल्फिंग द सॉरी so this is a candle. Closing shoulder should be more than 50% of the candle. So I think you could consider a lot of things, like even this is a piercing candle. So pierce कर रहा है in the sense नीचे से आके ऊपर काट रहा है उस चीज को, that's all, right? इसको मैं जनरली यूज नहीं करता हूँ एंड आपको भी ये यूज नहीं होगा ज्यादा, लाइक कोई भी इसको देख के ट्रेडिंग नहीं करता. सो आप इसको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख लो. बट ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स में ज्यादा अच्छे से प्ले आउट होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में बहुत सारे बुक रिलेटेड, मतलब बुक में कैसे दिखता है वैसे स्टॉक मार्केट में दिखता है, लेकिन क्रिप्टो में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, इसलिए वो चीजें ज्यादातर क्रिप्टो में अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है. या सो बुलिश इंगल्फिंग हो गया. नाउ लेट्स कम टू द मॉर्निंग स्टार. नाउ मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, बेसिकली मॉर्निंग स्टार भी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करता है. इसको मॉर्निंग स्टार इसलिए कहते हैं बिकॉज the chart is going down, right? The chart is going down and then वहां से वो U-turn ले रहा है and there's a two green candles happening. Now let me give you more example of the morning star. आप इन सबके स्क्रीनशॉट्स ले लो, या तो आपके शायद बुक में भी ये सब चीजें लिखी होंगी, राइट? सो yeah, so this is a 3 candlestick. So once you start trading, you will have all these alerts in place. So now I know that Bitcoin पिछले 2 घंटे के लेवल से ऊपर ब्रेक किया. That's why that alert came, right? So yeah, you get the point कि real time में कैसे आपको alerts आते हैं. Anyways, so let's talk about the morning star. So the morning star has 3 candles. अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे, they had 1 candle or 2 candles, right? So the morning star has 3 candles and it's basically more of a bullish pattern. So जब भी morning star बन रहा है, it means कि डाउन ट्रेंड था लेकिन अभी हम अप ट्रेंड में शिफ्ट कर रहे हैं. द फर्स्ट कैंडल, सो द रूल इज द फर्स्ट कैंडल हैज टू बी रेड. ओके,
the first candle cannot be green. The first candle has to be red. The second candle can be of any color. So this candle can be of red color or green color, any color. Okay, even if it's a red color, then also we'll consider this as a morning star candle. This candle should be having longer wick. So longer wick वाले candles को हम doji candles कहते हैं. I think it should be here somewhere. Doji candles इसमें नहीं है. Cool. Let me show you what a doji candle is. So doji candle क्या होता है? So doji candle ऐसा होता है जिसकी बॉडी ही नहीं होती है. आप समझ रहे हो? ये हाई प्राइस है, ये लो प्राइस है, एंड जहां पे ओपन हुआ है वहीं पे क्लोज हुआ. तो तब जब इसलिए हम इसको डॉजी कैंडल बोलते हैं कि मार्केट अनडिसाइसिव है. मतलब जहां पे प्राइस शुरू हुआ वहीं पे खत्म हुआ, भले ही उस घंटे में ऊपर जाके नीचे आ गया. सो दिस इज कॉल्ड एज अ डॉजी कैंडल. ओके, इसमें भी डॉजी कैंडल में भी 3-4 तरीके हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. बट एसेंशियली आपको डॉजी कैंडल का एग्जांपल्स दे रहा हूँ, राइट? सो दिस इज अ डॉजी कैंडल, दिस इज अ डॉजी कैंडल. क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी ही नहीं, वो जहां शुरू हुआ वहीं पे खत्म हुआ. Cool. So the rule is कि the morning star the first candle should be red. The second candle should be a doji candle or a spinning top. Okay, I think spinning top का भी example यहाँ पे नहीं लिखा है. Spinning top का भी आपको example दिखा देता हूँ. So spinning top, अरे यार, हाँ. So spinning top is something like this. Okay, so मतलब ये जो बॉडी है वो बहुत छोटा सा बॉडी है, and it looks like a spinning top. हम बचपन में वो खेलते नहीं थे, वो टॉप होता था, उसको रस्सी से बंधा होता था. You throw it and it spins, right? लट्टू. हाँ, जो भी आप बोलते हो. So this looks like a spinning top. So the rule is first candle red, second candle can be a doji candle or a spinning top. So in this example, we have used a spinning top. Okay. The third candle should be a bullish candle. Bullish candle in the sense, जो भी candle के wick नहीं होता है ना, and वो पूरा का पूरा green होता है. इसका मतलब क्या है? कि buyers ने यहाँ पे शुरू किया buying, and वो नीचे गए ही नहीं. वो पूरा कैंडल में वो लोग बाय करते रहे, इसलिए कि इसकी विक नहीं है, ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ, आई थिंक यहाँ पे हम कवर करेंगे उसको. अच्छा, आई थिंक आई हैव टू अपडेट दिस शीट, इसमें थोड़े बहुत एग्जांपल्स नहीं है. सो दिस इज द मोस्ट क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल एवर. So if someone asks you what is the most bullish candle ever, the most bullish candle is something which does not have a wick. I think we can see that in Aptos. Aptos बहुत pump कर रहा है. So Aptos में definitely ऐसे candles बने होंगे. Let me show you Aptos. सर ये स्क्रीन में भी दिख रहा है. तो ये स्क्रीन में भी दिख रहा है. लेकिन यहाँ पे wick है ना ब्रो, दिक्कत यही है. नहीं, पिछले वाले में. सब में विक आ ही जाता है, क्योंकि इतनी मैनिपुलेशन होती है मार्केट में, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है. बट यू गेट द पॉइंट, राइट? सो इट्स मोर इफेक्टिव व्हेन इट्स बैक्ड विद गुड वॉल्यूम. अब जब ये आपको ऐसा दिख रहा है ना, सो आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कैंडल है उसके ऊपर क्लोज हो रहा है द थर्ड कैंडल, एंड वॉल्यूम भी अच्छा खासा होना चाहिए. अब वॉल्यूम कैसे पता चलेगा हमें? आप नीचे आओगे, आप देखोगे कि यहाँ पे वॉल्यूम बार्स दिख रहे हैं, राइट? आपको ये वॉल्यूम बार्स दिख रहे हैं. सो जब आपका मॉर्निंग स्टार बनता है एंड ऐसे टॉप्स बन रहे हैं, दैट मीन्स द मॉर्निंग स्टार कैन प्ले आउट. तो अभी मॉर्निंग स्टार क्रिप्टो में तो उतना काम नहीं करता है जितना स्टॉक मार्केट में करता है. अगेन स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है मॉर्निंग स्टार और ये सारी चीजें. लेट मी जस्ट recently morning star I had seen in Solana when it formed. वन डे टाइम फ्रेम में कि कौन से टाइम फ्रेम में? 1 day time frame. ठीक है, चेक कर लेते हैं. $7 पे जब वो गया था. I think that is what like नीचे जब है. This is a red candle and then just started pumping. This one, right? हाँ, this is a morning star, right? But again थोड़ा बहुत weak है, but on a blind eye this is like a morning star, right? Because the market came down, spinning top बना and then ऊपर गया. दो ये बुक के हिसाब से पूरा परफेक्ट नहीं है, बट दिस कुड बी कंसिडर्ड एज अ मॉर्निंग स्टार. समझ में आ रहा है?
Like look at this 1, 2, 3, and look at this. Quite similar. You guys able to understand? Sir, I have one doubt. Yeah. Actually, you were saying mostly candlestick patterns does not work in crypto due to volatility. So, like कौन से sir मतलब patterns काम करते भी हैं कि नहीं करते? Like, can we have broad aspect on that? See, what I'm trying to say is these things is like learning ABC. If you want to learn English, you need to know what are the alphabets. Okay. Now, using this, probably you cannot trade because you need to be smarter, because this is something that even a kid can know, right? So my perspective is, without knowing this, it will be really difficult for you to trade. So this is something that you need to know, but just because of this, you cannot make profitable trades in a longer period of time. Got my point? So whenever you're learning a new language, you learn grammar, you learn the alphabets, you learn pronunciation and stuff like that. Exactly in that way, when you want to start trading, you should know all these bookish terms and things, so that when you put your strategy on top of it, plus this analysis, you'll get more precise trades where the chances of you making losses will go down. So this is all bookish knowledge. You need to test it with more strategies and build your edge. So if you want to make money in the crypto space or stock market space, you need to have an edge over the other traders, because at the end of the day, it's a zero-sum game, right? If you're making money, then there's someone who's losing on the other end. So you need to be smarter than the other person. That's only way of making money in the crypto space, because the money is not coming upar se. It's coming from someone who's losing. So this is all basic things. So my perspective was, because markets are so manipulative, the whales, as in the people with lot of money, they can create this, right? They can create this, they can dump and buy. And once they do that, you will feel ki, okay, it's a bullish trend, you will start buying, and then they might dump it because the manipulation is high. It does work in the crypto market as well, but crypto market mein any Tom, Dick, Harry can manipulate the market. But whereas in stock market, there's SEBI, which regulates it, and it's very difficult to manipulate things in the Indian stock market. Though it's possible, though it's very difficult then, right? So this was the perspective of me saying that these things don't work in the crypto space. It does work, but there's no guarantee that this will give you returns in the long period of time. Understood? Okay, sir. Cool. So just learn this, and once we have strategies in place, learning all this plus using them, it will give you a better result. But to be honest, I do not use this. Okay, my style of trading is different, but definitely you could use these things for your trades as well and make money. The next one is 3 white soldiers. So basically what this means is there are 3 candles with 0 to no wick, and all of them are green. This is happening after a downtrend. Okay, market came down, and then we had 3 strong candles which are piercing each other. Piercing in the sense every candle is above the other candle, and there's very less or no wick. So यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि people are buying aggressively. That's why this is called as a 3 soldiers. And basically ये कोई तो एक कहानी है जहाँ पे 3 सोल्जर ने एक किंगडम को अटैक किया था, और ये चीज वहां से आई है. So all of these namings which have been named with some sort of story. So वो story अगर आपको जाननी है तो there is a book, The Japanese Candlestick करके एक book है, तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं अगर आप इन सब चीजों को आप और डिटेल में जानना चाहते हो कि इसका नाम 3 white soldiers क्यों है. But yeah, I mean it doesn't matter, right? But if you're someone who is very curious, then you could read that book. उसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो. Cool. Any questions still here? कितने लोग हैं जो क्रिकेट मैच को मिस कर रहे हैं? I know that there's a cricket match going on right now. Is there anyone who is like missing watching the match and is super annoyed कि हम क्या ये soldiers के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? No? Cool. Awesome. So let's go to
Okay, least interested in crypto. Cool. So let's go to the next candlestick, which is called as white Marubozu, right? White Marubozu, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? We have a big selling candle with no wick. मतलब sellers ने जहाँ से sell करना start किया, वो लोग पूरा नीचे जाके उसको close किए, and उसके बाद ही एक buyers activate हुए. Buyers ने without any wick buying start कर दी. That means जहाँ से वो लोग buy करना start किए, उसके नीचे गया ही नहीं. जहाँ से opening हुई, वहां से नीचे गया ही नहीं, एंड वहां से पूरा ऊपर गया. So this means कि sellers tried their best to sell the asset, but the buyers came in and they started buying aggressively. Now, why this is a bullish trend is because this is happening after a downtrend. Okay, यहाँ पे downtrend था, downtrend के बाद ये start हुआ. I think ये आपको काफी क्रिप्टो करेंसीज में दिख जाएगा. Let me see कहाँ पे दिखाऊं आपको. एक aggressive buying कहाँ हुई है without wick. I think कोविड के टाइम पे हुआ था. कोविड के टाइम पे we had the V-shaped recovery, right? Let's see it. I think even this could be called the same. Like यहाँ पे भी you could see कि market नीचे गिर रहा था. We had a red candle, people started selling, and then a green candle, which was a very bullish sign, right? So again, like bookish जो चीजें दिखती हैं वैसे होती नहीं है. जैसे हमको, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि what we have to understand is कि psychology क्या है. What is the psychology behind what is happening? अभी आप बोलोगे कि सर लेकिन इसके हिसाब से तो विक नहीं होना चाहिए, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा. लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे क्या समझना है कि मार्केट नीचे गिर रहा था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना, उसके बाद बायर्स ने टेल के बाइंग स्टार्ट किया, तो एक बहुत बड़ा अच्छा ग्रीन कैंडल बना, एंड देन मार्केट स्टार्टेड शिफ्टिंग अबव फ्रॉम देयर. नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी रेड कैंडल बना है लेकिन उसके विक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है उसके विक है. तो शायद आप बोल सकते हो कि ये पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप साइकोलॉजी समझोगे, मार्केट्स वर डंपिंग, रेड कैंडल हुआ, then a very big candle came which pierced the previous candle, and then the trend changed, right? So this is also working the same, this is also working the same. So my point is, don't go exactly by the bookish terms, because ये चीजें कब, ये कौन से साल में बना था ये सारा? ये 1710 में बना था, ठीक है? तो 1710 में क्या था, वो तब तो मोबाइल भी नहीं थे कि लोग ट्रेड कर सके. आजकल तो आप 10 रुपए के ऑर्डर लगा के भी ट्रेड कर सकते हो. So we need to innovate, right? So yeah, you should just get the gist of it. That's why it's important for you to get the gist of it and not trade book to book, because अगर आप book के हिसाब से आप ट्रेड करने बैठोगे तो I don't think आपको कोई भी ट्रेड सेटअप्स मिलेंगे. Any questions? More questions? सर वैसे जो हम यहाँ सीख रहे हो वो स्टॉक मार्केट में अप्लाई करके हम भावे भी ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. बस स्टॉक मार्केट में आपको क्या करना है कि टाइम फ्रेम चेंज करना है. जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट, आपको पता है कि 9 बजे शुरू होता है, 3 बजे खत्म हो जाता है, तो अगर आप वहां पे डेली टाइम फ्रेम यूज करके इंट्राडे करना चाहते हो तो आप बेवकूफ हो, राइट? क्योंकि इंट्राडे 6 घंटे का होता है. क्रिप्टो में इंट्राडे इज लाइक 24 आवर्स, राइट? सो अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यू कुड यूज 1 आवर, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 5 मिनट्स. सो टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा बिकॉज मार्केट की टाइमिंग अलग है. तो सर एक अच्छा क्रिप्टो ट्रेडर एक अच्छा स्टॉक ट्रेडर भी हो सकता है मतलब? एक अच्छा क्रिप्टो ट्रेडर एक अच्छा स्टॉक ट्रेडर शायद नहीं हो सकता, क्योंकि एक अच्छा क्रिप्टो ट्रेडर वो होता है जो अपने मन के मर्जी से ट्रेड करता है, राइट? जैसे जैसे आप रात के 10 बजे ट्रेड करते हो, आप अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेड करना चाहते हो सुबह के टाइम में, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, प्लस सुबह आप ऑफिस में हो. आप जब ऑफिस में हो तब आप ट्रेड कर रहे हो, तो क्योंकि मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने वो किया है कि जब मैं जॉब पे जा रहा हूँ और मैं ट्रेड लेके बैठा हूँ, फिर मेरी बॉस मुझे कुछ बता देती है कि बेटा ये करके आ, तो मैं वो कर रहा हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि मैंने ट्रेड लिया है, और फिर मैं देखता हूँ कि शिट 10,000 लॉस हो गया, 20,000 लॉस हो गया. एंड एक दिन तो ऐसा हुआ था, मैंने 1,50,000 लॉस कर दिया था, जितनी मेरी मंथली सैलरी नहीं थी उतना मैंने लॉस कर दिया ट्रेड लेके, और मैं भूल गया था कि मैंने ट्रेड लिया.
और वो अचानक पंप कर गया। फेब का महीना ही था, बजट के वक्त, बजट आया, मैं कुछ ईमेल लिख रहा था, पंप 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 हो गया, और मेरा मेरा जो लैपटॉप है वो म्यूट पे था। सो जो अलर्ट की आवाज होती है वो आई नहीं मेरे को। सर स्टॉप लॉस नहीं लगाया था? स्टॉप लॉस, जब आप ऑप्शंस बाइंग करते हो तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। वो लोग क्या करते हैं कि आपके स्टॉप लॉस को टच करके उल्टा कर देते हैं मार्केट को, राइट। सो ऑप्शंस बाइंग में जनरली आप, जो स्कैल्पर होता है ना, जो स्कैल्पर वो होता है जो मार्केट के सामने बैठा होता है, वो तुरंत बाय करता है बड़ी क्वांटिटी का और तुरंत सेल करता है। तो मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय कर ली थी और स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, लेकिन मैं बंद करना उसको भूल गया। तो जितनी मैंने महीने में नहीं कमाया उस जॉब से, उस जॉब की वजह से मैंने उससे ज्यादा खो लिया सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर अंदर। सो एक सर तो स्ट्रैटेजी सेम चल जाती है, जैसे हर किसी की एक स्ट्रैटेजी होती है ट्रेड करने की, तो जो क्रिप्टो की स्ट्रैटेजीज है वो स्टॉक में चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी। स्टॉक में देखो एक ही चीज है, आपको अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो अच्छे से चलेगी, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा खासा होता है यहाँ पे। बट अगर आप कोई छोटा सा कॉइन, छोटा सा स्टॉक लेते हो जिसके ऊपर ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो शायद नहीं चलेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काफी सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बायर्स एंड सेलर प्राइस के अंदर में डिफरेंस होता है। सपोज आप 9 रुपीज में बाय करना चाहते हो, लेकिन सेलर है जो 12 रुपए में बेचना चाहता है, तो जब सिचुएशन वैसा होता है तो एक ट्रेड पॉसिबल नहीं है, राइट। बिकॉज बायर इज रेडी टू बाय एट 9 रुपीज, सेलर इज रेडी टू सेल एट 12 रुपीज। सो अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे से ट्रेड करना है तो ब्लू चिप स्टॉक्स या तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो, जहां पे लिक्विडिटी हाई है। कूल। सर मेरे लास्ट क्वेश्चन सर, ज्यादा पैसा कहाँ बनेगा? ज्यादा पैसा क्रिप्टो में बनेगा, ज्यादा पैसा क्रिप्टो में बनेगा, लेकिन स्टेबिलिटी चाहिए, सुकून की नींद चाहिए, तो शायद स्टॉक्स में बनेगा। क्योंकि सुकून की नींद क्यों? क्योंकि आपके टैक्सेस सॉर्टेड हो जाएंगे, आपके टैक्सेस काफी कम लगेंगे स्टॉक मार्केट में, लेकिन क्रिप्टो में आपके टैक्सेस बहुत लगेंगे। सो क्रिप्टो में टैक्सेस पे करना तभी वायबल है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 30% देना आपको ज्यादा चुभेगा नहीं। लेकिन ट्रेडिंग में एक तो मर मर के प्रॉफिटेबल बन रहे हो, उसके ऊपर से जब प्रॉफिटेबल बन रहे हो उसके ऊपर से 30% देना पड़ जाए तो आपको काफी चुभेगा वो चीज। तो ये सीन है। लेकिन अगर इफ यू समवन हु इज अर्निंग मोर देन 25-30 lakhs अ ईयर, तो तब भी आपको 30 लाख तो देना ही है। तो आप भले ही आप स्टॉक में ट्रेड करो या कहीं भी ट्रेड करो, लाइक 30% स्लैब में तो आप आ ही जाते हो, 30 या 25% स्लैब में आप आ ही जाते हो। तो डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पर ठीक है, इंडिया में वो चुभता है लोगों को, जब टैक्स वैक्स में पेमेंट करनी पड़ती है, लोगों को चुभता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप अपने देश के लिए कर रहे हो, राइट। आपके टैक्स के पैसों से ये रोड बनेगा तो जूम करके गाड़ी चला सकते हो एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। सो एनीवेज, सर एक्चुअली मेरा डाउट ये था कि लाइक 24 hours into 7 लाइक डेज क्रिप्टो मार्केट चलता ही है, कभी रुकता नहीं है। तो लाइक न्यू ट्रेडर मतलब क्या टाइम फ्रेम में करे, मतलब हम अपने लिए क्या रूल्स बनाए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कि मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड करें, क्योंकि पर्टिकुलर टाइमिंग तो कोई है ही नहीं। आई थिंक सो। yeah, so just hold on for a second. Excuse me, sir. I just asked you a question in in the chat box. Please just can you see that? Yeah, just hold on for a second. I'm just getting some water. So answering the question कि हम कब ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, like suppose if you're a student, you're busy throughout the day, just keep alerts on your trading view at the key levels, right? It could be support, resistance, or probably some sort of indicator or a trend line के आसपास आप you could keep a alert, and then you could place limit orders. So limit order पे आएगा तो automatically वो execute हो जाएगा। There's something called as OCO orders. तो probably जब मैं आपको live trading करूंगा तब मैं आपको OCO orders के बारे में सिखाऊंगा।
OC orders is basically orders where you could put your buy order as well as your stop loss. So वो automatically stop loss भी आप starting में define कर ले रहे हो, right? बिना आप trade में enter किए. So those kind of trades are very helpful to automate your whole process. And it depends upon you. Like for me, I trade between morning 12 a.m. to night 12 a.m. बीच में कभी भी, right? So बीच में कभी भी जरूरी नहीं है कि रोज करना ही है. Whenever I see something तभी मैं लेता हूँ. So it depends from person to person on your life, on your lifestyle. And suppose you're taking trades when you're sleepy. So ऐसे भी होता है, काफी लोग lose their sleep when they're trading, right? Like I have a friend जिसको मैं ट्रेडिंग सिखा रहा था, and मैं उसको अपने कॉल्स देता था. वो ट्रेड लेता था और फिर रात भर सो नहीं पाता था जब तक वो टीपी हिट ना हो जाए. सो अगर आपको वो बीमारी है तो ऑब्वियसली आपको रात में ट्रेड नहीं लेना चाहिए. सो डिपेंड्स कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, स्टफ लाइक दैट, राइट? I think someone was asking a question in the chat. Ibrahim is asking, I want to trade, but whenever I am seeing the graph, I feel like, अरे भाई इसे कैसे करें और कैसे समझे. तो मैं सोचता हूँ गेस करते हैं, फिर मुझे लॉस का डर होता है. मैं ट्रेड करना चाहता हूँ पर कर नहीं सकता क्योंकि मुझे समझ नहीं आता किस वक्त पे क्या करें. ग्राफ कैसे समझे? मेरे क्लासेस 8 AM से 8 PM तक हैं. I come home by 9:30 and then preparing for university studies as well. मुझे आपके क्लासेस पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता है यहाँ पर. What should I do, sir? So I know my camera is on. Just like give me a second. So I think, to be really honest, if I were you study, you concentrate on your university exams right now, because that is something which will give you a steady job, a steady income source, right? Because when you start trading, eventually for the first few months, unless you are controlling your emotions and controlling your desire to trade, you will make losses, right? So I think trading is something that you could learn probably after your exams as well. So for now, I think you could go ahead and study for university studies, university exams, because crypto is not going anywhere, है ना? And आप एक बार exams खत्म कर लो, अच्छे से पढ़ लो, जब आपके पास टाइम मिलेगा तो आप वापस यहाँ पे आना, प्लस डर को छोड़ के आना घर पे, है ना? क्योंकि अगर आप डरे रहोगे तो आप समझ नहीं पाओगे. सो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 10 चार्ट पे रोज करो, 10 चार्ट पे रोज ग्राफ्स, ये ट्रेंड लाइंस बनाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ, ठीक है? Only then you will understand. The problem is you're not ready to do the hard work. You need to start doing things before you can expect anything, right? And such बताऊं तो you are not passionate about trading. There are two kinds of people in the world, right? One kind of people who are passionate about trading, who want to learn stuff, who want to do stuff. They will do it, right? They will watch YouTube videos. They will not even enroll for any courses. They'll just do it, right? And some people are there who तो देखो ऐसे अलर्ट्स आते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, राइट? सो ऐसे अलर्ट्स आप लगा सकते हो. सो the second type of people are ones who want to just earn money. They have seen people on Instagram, वो लोग rented Lamborghinis में घूम रहे हैं, stuff like that, and then they just want to make money, right? So if you want to be in the second category जहाँ पे you just want to make money, right? तब आपको skill सीखने में थोड़ा interest डालना पड़ेगा. Until unless you don't learn the skill, you will not get into it. And right now I think it's better you study whatever you're studying, and then later on, once you have some time after you get a job, तब आप start कर सकते हो धीरे धीरे trade करना. Suppose like when I was working, I had a salary of around 60,000 rupees. That was my first salary. So उसमें मैं क्या कर रहा था? I used to keep 6,000 rupees as my trading fund. मतलब every month I will make sure that I would not lose more than 6,000 rupees. Okay, so 10% of my total income was going into this. That is my tuition fee. So whenever you make losses in the
stock market or crypto market, that is nothing but the tuition fee which you have to give to the market, irrespective you're starting today with the course, without the course. Okay, with the course, you would get you will not be surprised when you're losing money, because you already know ki, okay, this is a game of probability. When I'm making money, I have to make more money. When I'm losing money, I have to lose small money. Without the course, without the guidance, you will lose everything. You will not lose 5,000 then or 6,000 then. You will lose your whole salary, that is 60,000, because you're developing a gambler's mindset. Okay. So if you want to believe me, trust me, go ahead, complete your university exams, get a good job, start trading, be profitable trader for 2 years, and then go all in into trading. Because if you're able to be profitable for 2 years and make at least 5x of your yearly salary, that is, if you're earning 10 lakhs a year, if you're making like 10 lakhs into 1 crore by trading every year, then that means that you're good enough trader to stop working at a corporate job. Cool. That could be 10x or that could be 5x also. There are some people who have left their jobs after making 5 times more profit than their salary. So it depends upon you. But I think that is the most safest way of making money in the long term, rather than ignoring studies and doing trading and then losing money, then asking money from your parents, or probably doing a side job to get money for trading. So that would be my suggestion. I hope I've answered. I can't see you. Where are you? Ibrahim, are you there on the call? I was just speaking like this. All right, awesome. Cool. My screen is shared, right? So let's go ahead with the next one. The next one is called as 3 inside up. Okay. So basically, you could also call the middle candle as a inside candle. So whenever this kind of a pattern is happening, that means it's confirmed that we are in a bull trend. Okay. So what is happening here? The markets are falling with that followed with a big red candle. Then we had a middle candle or an inside candle, which was engulfed in the previous candle. What is this showing you? This is showing you that the markets. Let me draw and show it to you. What is this showing you? That the markets were falling. Then we had a red candle here. Then the market stopped here. Okay, we had a middle candle. And then we had a green candle. Okay. And the market started going up. So how will you understand this? There was a downtrend, a big red candle, an inside candle of any color, that could be green or red. The next candle was a bullish candle, which pierced both the candles, this candle as well as the inside candle, and then the trend changed. So क्या हुआ यहाँ पे? लोग sell कर रहे थे. Then the price stopped here. People were seeing what is going to happen. The buyers said, okay, we'll start buying from here. And then the prices started to rocket up. This is essentially what it means. Understood? Sir, that red candle and the small green candle also can be called as a bullish harami, right? This candle is called as this candle can be called as a bullish harami. This candle is called as a bearish harami. Okay, sir. Cool. Yes, sir. Thank you. Sir. So, talking about bullish harami, you have a red candle with no wick, and then a green candle with no wick. This happens basically after a downtrend. So this is called as a bullish harami. So again, this is what I call as inside candle. Okay, because this green candle is made inside this red candle, right? So for me, this is inside candle. I use it as inside candle. If you guys don't know what inside candle is, in the upcoming class where I teach about strategies, I will teach you this strategy as well. Okay. Any questions here? No, sir. Okay, cool. This is called as the tweezer bottom. Okay, so what actually happens here is you have a big red candle, that is a strong red candle, followed by a
inverted hammer. You could call this as an inverted hammer. Okay. You have learned what a hammer is, right? So अगर inverted hammer बनता है, that means the price started here, right? The price started here. This was the open price. It went up till this price, but the sellers started selling and the price bottomed up here, right? Now, what will I do is when we do live trading, right? I'll give you all these live examples. Right now, I think it will be really difficult for me to start looking out for these examples on the real-time chart. It will take a lot of time. But when we do live trading, I'll make sure that I, search for these things and show it to you, or else this could be like your homework as well, where you open the chart and you name tweezer bottom and all the bullish Sharami, 3 inside up. ये सारे चीजें आप अपने होमवर्क में कर सकते हो, या तो मैं खुद दिखा दूंगा. Cool. So this is a tweezer bottom. Basically, this is an inverted hammer. Talking about inverted hammer, hammer आपको पता है, hammer का उल्टा कर दोगे तो वो inverted hammer बन जाएगा, right? So this happens after a downtrend. So this is how an inverted hammer looks. Okay. Any questions? Three inside up again. This is how Anga. This is how 3 inside up looks like. Okay. Just take screenshots. This is also called as a 3 inside up. I do not use 90% of this, but definitely, like when we talk about strategies, we can use these things to confirm our trade. What is an on-neck pattern? On-neck pattern is basically this happens when exactly from the bottom of the red candle, the green candle is closing there without any wick. So if this thing happens, then that means it's a bullish trend. This happens at the bottom of a trend, right? This is a bullish trend. Cool. Questions? Like if you're not able to understand any of this, let me know, because इसमें ना ज़्यादा समझाने वाली कोई चीज नहीं है. These are just patterns which keep on happening in the market, and the direction tells you what is going to happen next. So we should just know how to identify them on the. Yeah. Hello, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Can you hear me? Yes, sir. Actually, network issue हो रहा है आज मेरे साइड से बहुत ज़्यादा. इस चक्कर में मेरे को आपकी आवाज़ भी बहुत कट के आ रही है. I'll see the recording. Cool. So what is more important is for you guys to identify these patterns. So how will we treat this? So that I will cover in the live class, right? The next one is bullish counter attack. So basically, what is a bullish counter attack? Bullish counter attack इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि we had a red candle. After that, the buyers started buying from bottom of it, right? So that's why this is called as a bullish counter attack. Again, these kind of things will not help you directly in trading, but indirectly this will help you find a narrative. What is a narrative? इसमें ये candle देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि the sellers were strong, but then the buyers started counter attacking. Okay, so this essentially means that counter attack हो रहा है. That means the price can go up. Let's just see now. I think Bitcoin is also going up because we had few alerts coming up. So let's just see what's happening in Bitcoin. So I had taken a trade on my Telegram where I had shorted this stuff, and because there was this inside candle happening, I exited with a small profit. But now you can see that it hit the stop loss, right? So let me give you a live example of how things are done. So to give you a very live example, I had like shared this kit. This is the BTC trade setup, right? Where I said that I'm shorting here. But what happened when I shorted? Like I'm just giving you this perspective so that you understand that real time maybe if you are saying that the market will go up, but if the
chart is showing you कि अभी कुछ और होने वाला है, then before your TP or SL hits, you can get out of the trade. You have to be that much open-minded. Okay. So I added this screenshot somewhere at around 3:34 p.m. saying that this is the BTC trade setup. Risk to reward isn't great, but it's 1:1.5. That means if I lose 1,000, I make 1,500. Okay. This was my SL. This was my TP. Okay. Now after that, what I added at 5:43 is closing this trade with a small profit, because inside candles formed in the last candle can go up from here. And you see that I closing candle. Let me just delete. Let me just put this here. Okay, I saw this inside candle happening, and whenever inside candle happens, that means the market has paused here and something big is going to happen. It went down, but it didn't touch my TP. This was TP, that was 22834. Okay, before that only it took a U-turn and it went and hit the stop loss. So if I didn't close the trade here, I would have eventually made a loss, because my TP was a little lower. How much lower it was? It came down to 22847 and my TP was at 22832. So in the real time, you need to take decisions where if you think that you are wrong, you get out of the trade. In this trade, I gave fees of $19 and I just made a profit of $1. So actually the whole trade was in $20 profit, but because the capital was big, I made only $1 because the fees was $19, but I didn't lose money here. If I had not taken it out here, then it would not have hit my TP. It would have hit my stop loss and I would have lost $150 odd. Right? So this is just to tell you that if you take a trade, if you feel that if you've made a mistake, if you think that you've made a mistake, you exit the trade with small profit or small loss, but don't go for a stop loss. Like if you have that control कि okay भाई मैंने गलती कर दी है, गलती मानो और छोटा लॉस ले लो या छोटा प्रॉफिट ले लो, लेकिन बड़ा लॉस लेने से बच जाओ. अभी ऐसे भी हो सकता था कि इट टच माय प्रॉफिट, राइट? अगर वो प्रॉफिट टच हो जाता तो मुझे बुरा लगता कि शिट यार, why did I exit here? I should have waited. But that is again a gambler mentality, because that means that I'm not trusting my instincts. See, trading is mainly like 80% your mentality. Your mentality includes instincts, right? Sometimes you have instincts which come true. And if you have strong instincts in trading, which comes with experience, you will be a profitable trader irrespective, right? So 20% is technical analysis and all the execution stuff. But the main thing is 80% of things, which is risk management and which is instincts. Instincts तो आ जाएगा experience के हिसाब से. और risk management important इसीलिए है क्योंकि अगर आप stop loss और TP नहीं लगाओगे तो you will make big losses, right? So just remember these things. Sir, can we short sell in crypto market more than twice or thrice in a day? You can do it n number of times. You could do it like 100 times also. Sir, we were talking about trading psychology. Yeah. Like 80% are mind works. Is there any suggestions for books that we could read on psychology? Yeah, I'll suggest you books probably at the end of this cohort, because it does not make sense telling you all of that right now, because you will not be able to like do everything at the same time, right? So before we finish the course, I'll give you a list of books which will also help you in building your mindset. And the best way to build your mindset is to put all your trades on a Google sheet so that you know what kind of mistakes you're doing, because it really hurts. It really hurts when you write it down, right? For example, if you write it down, I made a loss of $100 because I didn't add a stop loss. That thing actually hurts. It kicks in your mind and it will remind you that you're so stupid, right? So write it down. Even if you're making a profit, that will keep you more grounded because you're writing it down. Okay, I made a profit because I did this analysis and this happened. I made a loss
because my analysis was wrong and my risk to reward, that is risk management, was very bad. Writing it keeps you, it keeps on reminding you. And at the end of every week, you review all the trades that you take so that you'll understand what kind of mistakes you're doing. So when you're taking a trade, you write it down why you're taking a trade. And when you're exiting a trade, you write it down why you're exiting the trade. This will just help you build your mindset. ये चीजें आपको सिर्फ थोड़े महीने करनी है. Once you do it for few months, you will build the mindset of a proper trader. But this is something you have to do. Just give me a second. Someone is at the door. Awesome. I think let's wrap it off. I've taken a plan that because I keep on trading a lot in front of the charts, I keep on staring the charts a lot. I need to keep myself physically fit. So I've joined the gym, which is at 9 p.m. So I'll go to the gym now. This is also going to help you trade, because if you are physically fit, that means your trade executions will also be better. So just a request to all of you, like my friends are here, so probably that's why they're distracting me. But let me tell you this, if you're not physically fit, then it's impossible for you to take good trades. Okay, so just remember this, and let me know in the doubts section if you have any more doubts. I'll take that up. Cool. So today we have not covered bullish candlesticks in detail, right? Yeah, so I've just covered whatever was there in the class 7, and in the class 8 we'll cover the other stuff. Sir, before wrapping up, one last question. Like you were telling, after the cohort, you were going to suggest some books. Will you also keep in mind that please also suggest some books on technical analysis and fundamental analysis related to crypto? Sure. I mean, whatever help you need from my side, whatever experience I have, whatever resources through which I've learned, I'll share all of that with you. Don't worry. So can we connect to you like after the call or something like that through your Instagram or something? Yeah, but not today, because as I told you now. No, so not today. I'm not talking about today. I'm talking in future, like after this 6-week session, after that. Sure. Yeah, न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर अच्छी है. Hello. yeah, न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर जो बुक है. Yeah. Sir, I'm also reading Trading in the Zone. That is a good book. That's a really Yeah. good book. I've just started today. Someone I will have ask you a question. Sir, Bataiye. sir, I have a question. It may be an off-topic question, but question is how traders make money when there is a huge taxation in our government applies so much taxation and there is a huge volatility. Huge volatility gives you huge. Like, can you just mute after speaking so that there's no. Thank you. So most of the profitable traders, the ones who trade in millions, they have moved out of India. They have moved to Dubai, right? Why I have not moved to Dubai is because I'm not making more than $1 million a year. And according to my calculations, if you're making anywhere more than $1 million a year through crypto, it's not worth it to stay in India, right? $1 million is like 8 crores. So yeah, profitable traders have moved outside India, or some people have left crypto. They've started investing. They're not trading a lot, and so yeah, that's a question. That's the answer. And there was another question that you asked. I forgot. Taxation part. Most of them are trading on decentralized exchanges for now, because there's no regulation as such for decentralized exchanges as of now. So that they're doing. And also, like, if you are in 30% tax bracket, it doesn't matter, right? You'll still make. You'll still have to pay 30% to the government. Sir, I have a question. Can we make a group on WhatsApp? We could either like just talk to Crypto Pro people if they could do that, but yeah, so that they can be there to moderate it. I don't want to moderate it myself, because then that will take a lot of time, right?
Cool guys, I need to go. 9:30 gym बंद हो जाता है. And a quick tip for you as well. Keep yourself physically fit, because if you're physically fit, then you could take really good trades, right? Because your mind is sharp. So you need to keep your mind sharp. And I'll head over to the gym now, right? All right. Thank you so much, sir. Neha Nagar is following you. Yeah, she's a friend. All right then. All right, guys. Thank you so much. Good day. Bye. Thank you, sir. Yes. Bye, sir. Thank you. Bye. Good night.